Kipling. Rudyard Kipling, the son of John Lockwood Kipling, was born on 30th December 1865 at Rudyard. His father, a skillful draughtsman who received an appointment in India, was himself a writer. His Beast and Man in India shows how carefully he had studied the manners and customs of this wonderful country. Now, we will read something about Rudyard Kipling's works. Mr. Kipling's poetry covers a wide range. A great deal is outside our scope. Of the rest, we are inclined to single out his essential, which is poem, hymn, and power combined. Among his many fine poems may be mentioned The Sea and the Hills, and the fascinating verses descriptive of English countryside. Now, we will see the introduction to the poem. This is a poem with a moral lesson. In other words, it is a didactic poem. It speaks of a father telling his son what moral qualities are necessary for him to be an ideal human being. The poem makes mention of a series of tests to measure his spiritual self and find out to what extent he is virtuous and good. Now, we will read the summary of this beautiful poem. The man of noble disposition will never get worked up to meet a provocation with a show of temper. He will not be beside himself when he wrongly held responsible for an ugly situation. His public image may be tarnished by others as being a teller of lies. He will take care not to deal in lies while taking to others and ignore what others have said about him on this subject. He will hate none ever, though others show no respect for his sentiments. Of course, he will dream of good things, yet his dreams will not be so far removed from real life as to appear worthless. He will have an active mind which thinks, yet he will not make dreams. His master and will never lose touch with practical life. Success and failure will not influence him. He will always remain above the two situations, holding them to be simply illusory. He will not feel upset when he finds that the truth you have spoken is distorted and presented in an adverse light. If he finds that the work he has completed is demolished by the critics, he will not mind this, rather, he will rebuild which has been razed to the ground by them. Even if the best efforts to achieve his objective go unrewarded, he does not lose heart. He starts again at his beginnings, even when grown old and without much strength, the stamina to pursue his aims. He does not give up but holds on to a strong willpower to work for his goal. He does not mind being in the company of the common run of people, yet he never imbibes their outlook and their cheap way of leading the life. If he moves in high society, he never completely cuts himself off from the masses.
He never wastes a single minute of his life. Such a person with so many good qualities is destined to lead the world and everything that in it is his. Now we will see the central idea of this beautiful poem. The ideal man is unemotional, uncomplainable, and faces all misfortunes and setbacks with a calm mind. He is not carried away by victories. He never reacts to people around him. He is above influenced by the talk or behavior of others. He is adventurous, brave, and patient. He is tolerant, honest, perseverant, diligent, intelligent, and inclined to be rational because he is unemotional. Such a man enjoys a superior position in the world. एक बार मैं हिंदी में इसको समझा देती हूँ. द आइडियल मैन इज अनइमोशनल. जो एक आदर्श आदमी होता है वो भावुक नहीं होता, अनकम्प्लेनेबल, किसी की शिकायत नहीं करता, एंड फेसेस ऑल मिसफॉर्च्यून्स, और सारे दुर्भाग्य को वो फेस करता है, एंड सेटबैक्स विद अ काम माइंड, लेकिन फिर भी एक शांत दिमाग के साथ वो रहता है. ही इज़ नॉट कैरीड अवे बाय विक्ट्रीज. वह जीत से आगे नहीं बढ़ता है या जीत के कारण वह आगे नहीं चलता है. ही नेवर रिएक्ट्स टू पीपल अराउंड हिम. वह अपने आसपास के लोगों को कभी प्रतिक्रिया नहीं देता है. ही इज़ अबव इन्फ्लुएंस्ड बाय द टॉक और बिहेवियर ऑफ अदर्स. वह दूसरे के व्यवहार और उनकी बातों से बिना प्रभावित हुए रहता है या उनके प्रभाव से वो ऊपर है. ही इज़ एडवेंचरस, ब्रेव एंड पेशेंट. वह साहसी होता है, बहादुर होता है और धैर्यवान होता है. एडवेंचरस मतलब साहसी, ब्रेव मतलब बहादुर, पेशेंट मतलब धैर्यवान. ही इज़ टॉलरेंट. वह सहनशील होता है, ऑनेस्ट होता है, परसर्विंग होता है, डिलिजेंट होता है और इंटेलिजेंट होता है. वो बुद्धिमान होता है, वो नैतिक होता है और वो ईमानदार होता है. एंड इंक्लिन्ड टू बी रैशनल बिकॉज ही इज़ इमोशनल, अनइमोशनल. और वो एक समान रहता है क्योंकि वो भावुक नहीं होता. सच अ मैन एन्जॉयज़ अ सुपीरियर पोजिशन इन द वर्ल्ड. इस तरह के लोग विश्व में एक उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं या एक उच्च स्थान रखते हैं. एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंसेस फॉर देयर डाउटिंग टू. इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating. And yet don't look too good, no talks too wise. Now the first line, if you can keep your head when all about you. In this line, he says that if you keep your head when all about you, जब आप अपने बारे में बिल्कुल शांत रहते हैं, मीन्स इफ़ अ पर्सन कैन रिमेन काम एंड कलेक्टेड एंड रिफ्यूजेस टू बी प्रोवोक्ड बाय ऑल मैनर्स ऑफ प्रोवोकेशन. अगर आप अपने दिमाग को शांत रखते हैं और जबकि सभी लोग आपकी शिकायत, आपको रिफ्यूज़ कर रहे हों, आपको निगलेक्ट कर रहे हों और आपका विरोध कर रहे हों. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू. अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखने में आप सक्षम रहते हो, किस समय? व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब सभी लोग तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हों. मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, बट यू हैव एन एबिलिटी टू सी इट दो while other expresses many doubt on you in this regard. And you are waiting. You are waiting without getting upset or without showing temper. और आप अपना जो है डाउट, जो सामने वाले लोग आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, तब भी आप वेट कर सकते हैं
और वेट करने की, इंतज़ार करने से कभी थक नहीं रहे हैं। और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव अवे टू हेटिंग। एंड येट डोंट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वाइज। अगर सभी लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, तब भी आप उन्हें वापस नफरत नहीं दे रहे हैं, झूठ का सहारा नहीं दे रहे हैं, he is really a great man, then you are really a great man and deserves to be the master of the world. और आप अगर ऐसे हैं तो आप डिज़र्व करते हैं इस दुनिया का मास्टर बनने के लिए, बिकॉज यू आर द ग्रेट पर्सन. इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर आप सपने देखते हैं लेकिन सपनों को अपना मास्टर, अपना स्वामी नहीं बना देते हैं, इसका मतलब है कि आप सपने तो देखते हैं लेकिन सपनों के अनुसार ही नहीं चल रहे हैं. इफ़ यू कैन थिंक एंड यू नॉट मेक थॉट और योर एम, आप सोचते हैं लेकिन अपने सोच को, अपने विचार को अपना लक्ष्य नहीं बना लेते हैं. इफ़ यू कैन मीट विद ट्रम्प एंड डिज़ास्टर, अगर तुम विजय, ट्रम्प मतलब विजय से भी को भी देखते हो और डिज़ास्टर मतलब पराजय, डिज़ास्टर का मतलब आपदा होता है लेकिन यहाँ पर आप विजय और पराजय के साथ इसको देखेंगे. एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, और दोनों ही स्थितियों में आप एक जैसे रहते हो. इफ़ यू कैन बेयर टू हेयर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, और अगर तुम में वह सच सुनने की शक्ति है जो तुमने बोला है. ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, कि लोगों का पागल आप नहीं बना रहे हैं, जो आपने बोला है उस सच को सुनने की हिम्मत रखते हैं. और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप द बिल्ड देम अप विद वॉर्न आउट टूल्स. यदि आप अपने अंदर इतनी हिम्मत रखते हैं कि जो चीज़ें टूटी हुई हैं उन्हें आप फिर से बिल्डअप कर सकते हैं, बना सकते हैं, देन यू आर रियली अ ग्रेट पर्सन. एक बार इन लाइन्स का हम समरी पढ़ लेते हैं. द पोइट पॉइंट्स आउट दैट ड्रीमिंग इज़ नॉट अ बैड अनलेस इट इज़ टू आइडियलिस्ट एंड टोटली इररिलेटिव टू और अनकनेक्टेड विद रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. पोइट कहते हैं कि सपने देखना बुरी बात नहीं होती है अगर ये बिल्कुल इररिलेवेंट ना हो और रियलिटी लाइफ की रियलिटी से, सच्चाई से अगर ये अनकनेक्टेड ना हो तो ड्रीम देखना बुरी बात नहीं है. दैट ड्रीमिंग विच टेक्स into account an actual situation as it obtains at a given time is highly desirable. There is another point also which the poet begins to emphasize here. Success and failure, light and shades, joy and sorrow are an essential part of life. But as Shelley also says, Shelley, he was a great romantic poet, P.B. Shelley, Percy Shelley. If winter comes, can spring be far behind? कि अगर सर्दियाँ आती हैं तो क्या जो बहार होती है वो बहुत दूर चली जाती है. बोथ द सीजन्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में दोनों ही सीज़न, दोनों ही मौसम होते हैं. वन शुड बेयर दिस इन माइंड, सक्सेस शुड नॉट अनड्यूली इलेट अस एंड फेलियर शुड नॉट अनड्यूली डिप्रेस्ड अस. कि हमें एक चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए कि जो सफलता है वह हमारे सिर पर हावी नहीं होनी चाहिए, और जो निराशा है, जो हार है, वो हमें निराश नहीं कर देनी चाहिए, उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए. वी शुड टेक बोथ विद कंप्लीट फेथ इन आर एबिलिटी टू रिमेन इनडिफरेंट टू इमोशंस विच डिस्टर्ब आर इक्वलिटी और मेंटल पीस. कि हमें दोनों को एक जैसे देखना चाहिए, दोनों में एक जैसा विश्वास रखना चाहिए, और हमें ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम दोनों ही स्थिति में समान रह सकें और अपने भावनाओं को इनडिफरेंट टू इमोशंस, अपनी भावनाएं हमारी बिल्कुल समान रहनी चाहिए. विच डिस्टर्ब आर क्वांटिमिनिटी और मेंटल पीस, कि जो हमारे समानता को और हमारे मानसिक शांति को डिस्टर्ब करती हैं. वी शुड नॉट माइंड हियरिंग द ट्रूथ अबाउट आवर सेल्फ इवन इफ इट इज़ बिटर. हमें कभी भी सच्चाई को सुनने से परहेज़ नहीं करना चाहिए, इवन अगर ये हमारे लिए कड़वा हो तो, बिटर अगर कड़वा हो. बैड पीपल अराउंड अस विल मेक एवरी एफर्ट टू ट्विस्ट दिस
ट्रुथ, जो बुरे लोग होते हैं, हमारे चारों तरफ जो बुरे लोग होते हैं, वो हर संभव कोशिश करेंगे, विल मेक एवरी एफर्ट, वो हर संभव कोशिश करेंगे टू ट्विस्ट दीज ट्रुथ बीइंग स्प्रेड एंड टू मिसगाइड अदर्स, कि इस सच्चाई को ट्विस्ट करेंगे, तोड़ मोड़ कर फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे और लोगों को मिसगाइड करेंगे। ये चीज़ हम देखते भी हैं। बैड पीपल अराउंड अस, जो लोग हमारे आसपास बुरे लोग हैं, विल मेक एवरी एफर्ट टू ट्विस्ट दिस ट्रुथ, कि इस ट्रुथ को, इस सच्चाई को ट्विस्ट करके, तोड़ के, मरोड़ के, बीइंग स्प्रेड, फैलाएंगे, एंड टू मिसगाइड अदर्स, किस लिए? जिससे कि दूसरे लोगों को मिसगाइड कर सकें, उनको गलत फहमी उनके अंदर पैदा कर सकें। ऑल दिस शुड नॉट प्रोवोक इन अस रॉन्ग एक्शन, इस तरह की सभी चीज़ों से हमें गलत एक्शन करने के लिए प्रोवोक नहीं होना चाहिए। प्रोवोक का मतलब होता है ज़्यादा किसी को उकसा देना, हमें प्रोवोक नहीं होना चाहिए जिससे कि हम गलत एक्शन ले सकें। द लास्ट लाइन मैं एक बार और फिर रिपीट करूँगी। बैड पीपल अराउंड अस विल मेक एवरी एफर्ट टू ट्विस्ट दिस ट्रूथ बीइंग स्प्रेड एंड टू मिसगाइड अदर। All this should not provoke in us wrong action. Next is, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitches and loss and start again at your beginning and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you, expect the will which say to them, hold on. Now, earlier the poet has been talking of many qualities which the ideal man should show. Kipling's ideal man is superior to the common run of the people in many respects. Suppose you have applied your best, used all your resources to achieve your aim, but have lost. There is no occasion for the ideal man to lament the loss or feel downhearted. He should return to his struggle with a redoubled effort till he achieves this objective. Even when he is grown old and has little physical strength left in him, he must not lose the will, the unflinching determination to catch hold of success as when it comes to him. तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको इफ़ पोएम समझ में आई है और भी किसी पोएम को आपको एक्सप्लेनेशन या सेंट्रल आइडिया समझना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।